वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग. दिस इज देव हियर. तो गाइज आज हम जिस जगह आए हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्लेस है. ब्रो वेयर आर वी? इज़ू. तो यहाँ का ये काफ़ी सुंदर सा प्रीफेक्चर है. इज़ू इज इट अ प्रीफेक्चर और अ सिटी? Shizuoka? इज़ू इज़ अ सिटी और प्रीफेक्चर? Izu? Well, city, I guess. इसको भी नहीं पता बेसिकली. तो इज़ू इज़ अ सिटी आई थिंक. और हम आए हैं शिज़ुओका प्रीफेक्चर में जहाँ पे माउंट फूजी है. ब्रो वी कैंट सी माउंट फूजी राइट? Yeah, I don't think we can. It's cloudy and it's raining, bro. It was not a good idea that we came today, but it's gonna be fun for sure. तो अभी हम लोग ना एक ऐसे zoo में आए हैं. Bro, what's unique about this zoo? Well, you can interact with the animals in the zoo. We can touch, right? Yeah, and it focuses on reptiles instead of mammals. भाई मैं अगर इसके अंदर चला जाऊँ तो क्या मैं खतरों का खिलाड़ी बन सकता हूँ? नहीं. Bro, what are these? Lizards? These. Yeah, human iguanas. Iguanas. Do they bite? They have very powerful claws. Oh, okay. It's like the monitor lizard living in Australia. Dude, looks scary, man. Is it venomous? I'm not sure. Monitor lizards can be venomous. Bro, look at this. Black mamba. These are super fast, right? Yeah, I think one of the fastest snakes in terms of movement. Really? Yeah, locomotion. But this is huge, man. Yeah, I think they're like the second largest venomous snake in the world. Actually. Yeah, after the king cobra. जलवा है हमारा. And I'm not sure if it will open its mouth, but like its mouth is completely black. It's from. Oh, that's why it's called black mamba. Yeah. 結構手を突っ込んで背中を撫でていただくのは大丈夫です。ブーとアゴヒゲとかがこうやって出てくるのよ。 What are the spines? そうですね。比較的この子は撫でるのみになります。ちょっと今練習中になります。そう、ちょっと爪が痛いんでね。はい。そうですね。ある程度やっぱり防御力の上では硬くはなってますけど、そこまでねがっちり硬くはないかな。でめっちゃ柔らかいのが両手パーでそのまま乗せます。標本とかギモときレオパード月光ですね。 Leopard So- gecko. How does it feel, bro? Very soft. Really? Yeah. それで大人サイズ。一応10年、15年、長いと20年。 Apparently this is an adult. Pretty small. はい、パーで。 Bro, this is soft. はい、裏側は向こうで並んでいただくようになります。こちらはね、ちょっと待ってください。 How does it feel, brother? It feels soft, man. It's soft. じゃあヘビいきますよ。 Damn. 置いといてもらって大丈夫です。OK。 Whoa. そうです。締め付ける力がとても強いヘビですね。 Bro, which snake is this? 筋肉自体がとても細かいので、要は手みたいにキュッてこう締めることができる。 Does it bite? あ、もらいますよ。上に持って木の上で生活してるので、きついてね、寝たりもするので。重いよ。 Yeah. OK。 Bro, this looks so weird. Very long. भाई बहुत अजीब सा लग रहा है. それはね、落ちないように巻きついてるだけだから大丈夫。 Oh, it's just, you know, constricting your arm just to stay stable. भाई बहुत अजीब लग रहा है ये. इतने झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा, इतने. Oh, swelling my finger. 温度に反応しますので、おう人の熱源の方向きますよ、この子は。よいしょ。そう。賢いんですよね。 भाई पहली बार सांप को टच किया. Bro, what snake is this? Boa constrictor. क्या कर रहे हैं यार तू? भाई इस केज में ना पीछे हमारे जापान का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल है. Bro, what's the name? Is there any name given to it? His name is Salt. Salt? Yeah. Because the species is the saltwater crocodile. Ah, so it's Yeah, they call him salt. Salt. And he measures like कोई अच्छा नाम नहीं मिला तुम्हें हैं? कुछ अच्छा ढंग का सोच लेते बेचारे के लिए. So, bro, that's huge. Or is it just the refraction I'm seeing? Nah, it's huge. That's huge, right? Yeah. 5.1 meters and 800 kg. 800 kgs. Yeah. This is called घड़ियाल. Yeah. What's in Japanese?
You just say Indo Kabiaru. हिंदू घड़ियाल। ओह भाई ये अपने इंडिया का है, इंडिया का घड़ियाल है ये घड़ियाल। भाई काट तो ना लेगा मुझे। Will it bite? Yep. Oh, but I'm Indian. झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा, इतने। तो भाई ओवरऑल ये कुछ ऐसा जू है जहाँ पे आप एनिमल्स को है फिजिकली टच करके देख सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आप उससे क्या है कि कनेक्ट कर पाते हो एनिमल से एंड यू कैन इंटरेक्ट विद एनिमल्स। यार ये मेरे को 10वीं बार इस जगह पे लेके आया, पता नहीं इसको क्या चाहिए इस क्रोकोडाइल से। बोलता है जापान का सबसे बड़ा है। भाई घर ले जाएगा क्या, बड़ा है तो। मसा, लेट्स गो मैन। How many pictures did you take of this croc? I don't know. Maybe like 100? 100. Do you have a snake as a pet? No? Yeah, but I actually captured it last year. Oh, at home. Yeah. Bro. Can you edit in the picture in the video? Okay, you have the picture? Yeah. Okay, send me, okay? So you had a pet. I mean, you can call it as a pet, you know? Yeah, for like 1 day. Damn. Pet for one. So you, how did you catch though? Actually, me and my younger brother, Yeah. we were outside in the forest, like trying to capture like insects. And So you're from the forest, you captured yeah, it? Damn. my brother found it. Was it venomous? Nope, it's not venomous. Oh, okay, okay. It's like a really rare species. तो भाई ये जो जगह है ना, ये है अपनी शिजुओका प्रीफेक्चर में। मैं पहली बार आया हूँ वैसे शिजुओका प्रीफेक्चर। एंड अभी हमने ये ज़ू तो देख लिया, अब इसको एक और ज़ू देखना है। मतलब ज़ू नहीं है वो, थोड़ा सा अलग टाइप सा है, तो वहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे एक दिक्कत ये पता है क्या है कि यहाँ पे बसेस वगैरह नहीं होती, टैक्सी होती है बस। और टैक्सी लेने के लिए अपनी एक किडनी देनी पड़ती है हर राइड में। तो अभी वो टैक्सी बुला रहा है एंड उसके बाद चलते हैं टैक्सी में। We're lucky like it didn't like rain too heavily today. Oh yeah, but it's raining tomorrow I guess. Tomorrow's very heavy rain. We must be prepared. तो भाई यहाँ पे ये पीछे था एक और म्यूज़ियम था मेंढक वगैरह का। इस बंदे ने आज मेरे को इतना परेशान किया ना मेंढक दिखा के, भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया। आज मुझे पता है कि मेरे सपनों में मेंढक कॉकरोच यही आने वाले हैं। तो यहाँ पे एक वाटरफॉल है नीचे, वहाँ पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। बाकी रास्ता देखो भाई, क्या रास्ता है ना, एकदम नेचर से जुड़ी हुई प्लेस है ये, तो क्वाइट इंटरेस्टिंग। मसा Have you been to these kind of places before? Well, yeah, a long time ago. Long time ago. Where? In like Hokkaido? Yeah, Hokkaido, Gunma. Like the skiing places are always like this. तो भाई अभी एक ट्रेन गई थी हमारे, मतलब जहाँ पे हमारा होटल है वहाँ पे, बट हमने मिस कर दी। हमने सोचा कि अगले 2 मिनट में एक और ट्रेन होगी, बट वी एक्सीडेंटली मिस द ट्रेन। ब्रो, व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन? In 1 more hour. Oh bro, so we gotta wait here for another 1 hour, क्योंकि कोई ट्रेन ही नहीं है भाई। टोक्यो में क्या होता है, हर 2 या 3 मिनट में ट्रेन आती है, बट ये इलाका देख लो कैसा है, मतलब पूरा विलेज साइड है ना, और काफ़ी अच्छा भी है वैसे। तो यहाँ पे ट्रेन हर 1 घंटे या आधे घंटे में आती है, तो हमें अभी वेट करना पड़ेगा 1 घंटे। एंड स्टेशन पे ना कोई भी नहीं है, मतलब हम 2 बंदे हैं एंड और कोई नहीं है स्टेशन पे। तो अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, ऐसे ही चिल करते हैं 1 घंटे के लिए, टाइम पास करना पड़ेगा, और उसके बाद चलते हैं अपने होटल पे। क्या करता है रे तेरी तो। भाई यहाँ पे ये ओनसेन जो जापानीज़ ट्रेडिशनल बात होती है ना, वही है यहाँ पे। तो देखो कितना ज़्यादा स्टीम है भाई, बहुत गर्म पानी होता है वैसे तो। It's like 30 minutes away. 30 minutes away? Okay, we'll walk there. This is the onsen, right? Like there's not a lot of vegan. तो भाई अभी हम लोग आए हैं कुछ खरीदने, मतलब डिनर के लिए। तो देख रहा हूँ अगर कोई वेजिटेरियन कुछ मिलता है तो, बाकी मेरे को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कुछ वेजिटेरियन मिलेगा। एंड यहाँ पे कोई आसपास रेस्टोरेंट भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ काम चलाना ही पड़ेगा कुछ करके। Bro, is there anything vegetarian? Doesn't look like it. Wait, katsuobushi. Katsuobushi? It's like tuna. Like Bro, no, I can't eat tuna. It's not exactly tuna, but it's like dried tuna. भाई जापान में ना खाने के नाम पे इन्होंने बस धो के खिलाए हैं और कुछ भी नहीं। वेजिटेरियन है ही नहीं यार कुछ भी। Bro, what should I do then? You think there's some instant curries or some shit that's vegetarian? Really? Oh wait, that's butter chicken bro, still chicken. भाई कुछ भी वेजिटेरियन नहीं है, लाइक सीरियसली। ये जो करी वगैरह जो भी दिख रहे हैं ना, ये जो फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, इनमें भी नॉन वेज डाल रखा है।
मैं हार्पिक पी लूँ यहाँ पे है, हार्पिक पी लेता हूँ एक।